Good morning, students. In our last class, we have done worksheet number 2, which was based upon chapter number 3. And today, we will do chapter number 11, which is Roman numerals. You already have done basic concepts of this chapter in class 4th. And today, we will recall that concepts. Let us start. Things to remember. These are important points. First is Hindu-Arabic system of numeration. It includes 10 basic numbers. Which numbers? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. There are 10 basic numbers under Hindu-Arabic system of numeration. तो हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कितने नंबर्स आते हैं? 10, 0 से 9 तक. सेकेंड पॉइंट इज रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इसमें आते हैं 7 सिंबल्स. इट इंक्लूड्स ओनली 7 सिंबल्स टू राइट एनी नंबर. दीज आर I, V, X, L, C, D and M. I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. Clear? I, V, X, L, C, D, M. There are 7 symbols. Next, we have some rules for writing Roman numerals. We have 3 rules. First rule is repetition of the number means addition of the number. Means रोमन न्यूमरल में जब रेपिटेशन होती है तो उसका मीनिंग है नंबर्स को ऐड करना. फॉर एग्जाम्पल आई मीन्स हमने किस किस को ऐड किया है? आई मीन्स 1, 1, 1, 1, 1 plus 1 plus 1, 3. Next is x means x for 10, 10 plus 10 plus 10 is equal to 30. Next is C denotes for 100. 100 plus 100 plus 100 is equal to 3. Means रोमन न्यूमरल में जब किसी रोमन न्यूमरल को रिपीट किया जाता है तो दैट मीन्स के नंबर्स उन नंबर्स को हमने ऐड करना है. नेक्स्ट रूल नंबर 2, इफ अ स्मॉलर रोमन numeral is written to the right of a greater numeral, then the smaller numeral is added to the larger one. Means we have example VII. V is for 5, I for 1 and 1. Means I is on the right side of the Roman numeral V. V is larger number, I is smaller number. Smaller Roman numeral larger के right side में है. That means to add 5 V and I means V plus I. V plus I means 5 plus 1 6 plus 1 7. So 5 plus 2 is equal to 7. Next XII. I is also lie on the right side of the Roman numeral X. I smaller Roman numeral है, X larger. तो स्मॉलर लार्जर के राइट साइड में है तो प्लस करेंगे. ये दोनों स्मॉलर है, दोनों को प्लस करना है. 10 plus 2 12. CL. C for 100, L for 50. C is a greater number, L is a smaller number. तो स्मॉलर ग्रेटर के राइट साइड में है, L C के राइट साइड में है तो ऐड करेंगे 100 plus 50. 100 is for C, 50 is for L. So it is equal to 150. Next is LXI. L is 50, X means 10, I means 1. So L is greater, X is smaller, I is smaller. X and I means 10 plus 1, 11 and L is a greater number, X is a smaller number. L means 50, X means 10, I means 1.
So it is equal to 6. Next we have rule number 3. If a smaller Roman numeral is written to the left of the larger numeral, the smaller numeral is always subtracted from the larger one. कि अगर स्मॉलर रोमन न्यूमरल लार्जर के लेफ्ट साइड है तो हमने उसको माइनस करना है. जैसे आई इज अ स्मॉलर, वी इज अ लार्जर. सो लार्जर में से स्मॉलर माइनस वी फॉर 5, 5 minus 1, it is equal to 4. Next is ix, x is a larger, I is a smaller, larger में से smaller minus 10 minus 1 9. xl, x10, l 50, 50 minus 10 40. xc, x10, c 100, 100 minus 10 is equal to 90. Clear? Rule number 1 is रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स. 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं. सेकेंड रूल है कि अगर स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के राइट साइड में है तो प्लस करना है. थर्ड रूल है स्मॉलर न्यूमरल लार्जर के लेफ्ट साइड में है तो माइनस करूँगी. लार्जर के लेफ्ट में स्मॉलर है तो माइनस, लार्जर के राइट में स्मॉलर है तो प्लस. क्लियर? Next we have 4 points which are important. So keep in mind these points while solving Roman numeral sums. First is repetition of Roman numeral is not allowed. 3 times से ज़्यादा repeat नहीं कर सकते. जैसे x x x x x x means 30. इसको 4 टाइम repeat नहीं कर सकते आप. It is wrong. ये wrong concept है. Next is VL and D. V5, L means 50 and D means 500. These are never repeated. ये कभी repeat नहीं होते. इस फॉर्म में आपको मिलेंगे ही नहीं. ये ना तो डबल टाइम रिपीट होते हैं ना ही ट्रिपल टाइम. कभी रिपीट ही नहीं होते ये D D D. So these are wrong concepts. Next is the numeral VLD means these numerals are VLD, VLD can never be subtracted. ये कभी subtract भी नहीं होते किसी से. Clear? Next is I is never written to the left of LCD. LCD के लेफ्ट में I कभी नहीं लिखा जाता इस फॉर्म में. ये होता ही नहीं कभी. Clear? So these are main important 4 points. Next we have exercise 11.1 based upon previous knowledge. First is write the following Hindu Arabic numerals in Roman numerals. This exercise is based upon प्रीवियस नॉलेज जो अपने 4th क्लास में किया था उस पे बेस्ड है ये सारे कंसेप्ट्स. तो फर्स्ट इज 11. इसको हमने रोमन में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू स्प्लिट दीज नंबर्स. 11 मीन्स 10 plus 1. रोमन न्यूमरल फॉर 10 is x and for 1 is I. It is xi. Next is C part. 24. 20 plus 4. 20 is equal to 10 plus 10 and 4. There is no Roman numeral for 4. So how do we write it? We will do it as 5 minus 1. 10 for x. 10 for x. 5 minus 1. माइनस का कॉन्सेप्ट है तो स्मॉलर नंबर लार्जर के लेफ्ट में लाई करेगा. स्मॉलर 1 था माइनस और ये लार्जर इसमें माइनस किया तब 4 आया. 5 minus 1 4. So it is equal to x x I v. Clear? Means 4. IV means 4. Next is 36. 30 plus 6. 30. Next is D part 36. We can split it as 30 plus 6. 30 can be written as 10 plus 10 plus 10 and 6 can be written as 5 plus 1. 10 10 10. 5 के लिए V
1 के लिए I, it is equal to triple times X and VI. 30 plus 5, 35 plus 1, 36. Next is part number E. Last part 39. It can be written as 30 plus 9. 30 can be written as 10 plus 10 plus 10, and 9 can be written as 10 minus 1, as there is no Roman numeral for 9. 10 के लिए x, and it is minus concept, means smaller Roman numeral will lie left side to the larger Roman numeral. It is 9. Clear? 39 is equal to x, I, x. Next is question number 2. Write the following Roman numerals in Hindu Arabic numeral. Hindu Arabic में इसको convert करना है. So V is equal to 5, I is equal to 1. It is equal to 6. Next D part is x, I, x. x के लिए 10, I लार्जर के लेफ्ट साइड है तो 10 minus 1 means 10 plus 10 minus 1, 9 is equal to 19. X, I, x is equal to 19. Next part I is triple times x, V, I. X is for 10, 10, 10. Triple times 10, V, 5 and I, 1. It is equal to 30 plus 5 plus 1, 6. It is equal to 36. 30 plus 6, 36. Next, J part is x, V, I. X, 10, V, 5, 1, 1 means 2. 15 plus 2, 17. So, x, V, I is equal to 17. Clear? Solve remaining parts of this exercise as a homework. Revise these concepts of Roman numerals, then solve the remaining parts of exercise 11.1. Thank you.